friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 10th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला जो न्यूज है वो वापस से नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। रिसेंटली यूएस लेबर इकोनॉमिस्ट क्लॉडिया Goldin was recently awarded the 2023 Nobel Prize in Economic Science for her contributions to understanding women's labor market outcome. ठीक है, सो ये है क्लॉडिया और इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में फॉर द कंट्रीब्यूशंस इन अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है, कि विमेंस का क्या रोल है हमारे मार्केट में और अभी तक जो एंशियंट मतलब पुराने टाइम से अभी तक का विमेंस का रोल बढ़ा है या घटा है। इनका ये रिसर्च काफी हेल्प करेगा हमें और ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट और बाकी सारे विमेंस के लिए हेल्थी स्कीम्स वगैरह डेवलप करने में। Or women's can how women's participation can be increased in our workforce. So it has been awarded to economist Claudia Goldin for advancing the understanding of women's labor market outcome, and the Nobel Prize in Economic Science is also known as the Sverige Risk Bank. अच्छा ठीक है, ये Nobel Prize in Economics का नाम है Sverige Risk Bank Prize in Economic Science. And Goldin is only the third woman to win the prize since it was first introduced in 1969. तो she is the third lady. ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए पहली दो लेडी कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने रिसर्च में क्या फाइंड किया है। शी प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वुमेन्स अर्निंग एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन थ्रू द सेंचुरीज एंड हर रिसर्च रिवील्स द कॉजेस ऑफ चेंज एज वेल एज द मेन सोर्स ऑफ द रिमेनिंग जेंडर गैप। ठीक है, she showed that female participation in the labor market did not have an upward trend over 200 years period but instead form a U-shaped curve. Very important segment, इस तरह से ही यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विमेंस का पार्टिसिपेशन अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, रादर ये यू ट्रेंड शेप है, यू शेप में है। ठीक है, and the participation of married women decreased with the transition from an agrarian to an industrial society in the early 19th century, but that started to increase with the growth of service sector in the early 20th century. तो women's का participation जो basically जो married women का participation है वो कम हो रहा था। मतलब ट्रांजिशन जब हमारी सोसाइटी कर रही थी फ्रॉम एग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, बट जैसे ही ये धीरे धीरे जो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर आया तो उसमें धीरे धीरे फिर पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो गया। That was the major thought result. उसके बाद Goldin explained this pattern as the result of structural changes and evolving social norms regarding women's responsibility for home and family. क्योंकि home and family में भी women's को देखना पड़ता है, इसके चलते थोड़ा उनके participation कम हो गया है। Next, historically much of the gender gap in earnings could be explained by difference in educations and occupational choices. And however, Goldin has shown that the bulk of this earnings difference is now between men and women in the same occupation and that it's largely arises with the birth of the first child. ठीक है, she highlighted the role played by marriage, parenthood and contraceptive pills in women's education, career and salary trajectories. उन्होंने कहा कि मैरिज और parenthood, even contraceptive pills in women's education played a dominant role in increasing their means what do you call it, their partnership in the work. तो उनका लेबर फोर्स को इंक्रीज करने में काफी हेल्प किया ये सब। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द गोल्डन और उनका रिसर्च। नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। रिसेंटली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को Reliance General Insurance Company (RGIC), which is a subsidiary of Reliance Capital, recently received so-called notice amounting to nearly 923 crores from the Director General of GST Intelligence. ठीक है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की जो एक सब्सिडरी है रिलायंस कैपिटल का, उनको सोकॉस नोटिस दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने, एंड लगभग 923 करोड़ का। ठीक है, जीएसटी के साथ कुछ लफड़ा है उनका। नेक्स्ट, अब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीआई का क्या रोल है। बेसिकली ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जो है, इनको पहले इट वाज नोन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। ठीक है, जिनको बदल के जीएसटी इंटेलिजेंस कर दिया गया। इट इज एन एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। And it is entrusted with the task of collections,
collations and dissemination of intelligence relating to the evasion of goods and service tax and the duties of central excise and service tax on all India basis. ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पर ये लोग इसको कंट्रोल करते हैं. The main responsibility क्या है? The intelligence gathering. The DGCI is responsible for gathering intelligence about potential violations of GST laws. This include collecting information from various sources such as GST return, financial statement, and other documents. Investigation के हिसाब से the DGGI has the power to conduct investigation into suspected cases of GST evasions or non-compliance. This may involve summoning persons, examining record, and carrying out search and seizures. ठीक है. It also act as enforcement. The DGGI is responsible for enforcing the provisions of the GST laws. This include taking legal action against the offenders, imposing penalties and recovering any taxes or duties. जो ड्यू वगैरह होगा उसको रिकवर भी कर सकते हैं. And last, other functions अगर देखा जाए तो DGGI works closely with other agencies such as the Central Board of Indirect Taxes and Custom and the state GST authorities to ensure effective implementation of the GST laws. It also play a key role in creating awareness about GST compliance and educating taxpayers about their obligations under the law. And it is also responsible for providing technical and legal assistance to field officers and other government agencies involved in the administration of the GST. So that is regarding the functions of the Director General of GST Intelligence. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. As well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.